This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मनी मैटर्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से। Domestic stocks declined more than 1% in intraday trade. Rupee weakens marginally against the US dollar and global stocks log losses amid profit booking worldwide. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में अंतर दिवसीय कारोबार में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 654 अंक यानी 1.14% की गिरावट लेकर 49,061 पर दिख रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 170 अंक यानी 1.6% घटकर 14,421 पर आ गया। विस्तृत बाजारों में भी मुनाफा वसूली का असर देखा जा रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.99% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.96% नीचे चल रहे थे। Looking at how the rupee performed, the rupee today weakened marginally by 3 paise to finish at 73 rupees and 3 paise against the US dollar. The domestic unit depreciated amid a fall in the Sensex and Nifty indices. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, was flat at 90.12 in intraday trade. वैश्विक बाजारों पर ध्यान दें तो वैश्विक बाजारों में भी आज मुनाफा वसूली चौतरफा देखी जा रही है। एक ओर रिकॉर्ड ऊंचाई पर लगभग सभी प्रमुख शेयर बाजार पहुंच गए, वहीं अब निवेशकों की ओर से अपना धन वापस निकाला जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन उपाय किए जाने की उम्मीदों पर पिछले कुछ सत्रों में दुनिया भर के शेयर बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखी गई और प्रमुख शेयर बाजार अपने अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। आज बिकवाली का दबाव है और बिकवाली के दबाव से एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.6% घाटे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.1% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% नीचे आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और जापान का निक्केई 225 सूचकांक दोनों ही 0.4% के आसपास नुकसान में दिख रहे थे। यूरोपीय बाजारों की ओर ध्यान दें तो वहां भी अंतर्दिवसीय कारोबार में मुनाफा वसूली बनी हुई थी। लंदन का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का DAX तीनों ही लगभग 1% से नीचे 0.8-0.9% के आसपास गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। And let's have a look at the US market before we take our expert Puneet Jain. The Dow Jones and the S&P 500 indices ended flat but remained at record highs yesterday. Nasdaq logged gains of 0.5% as investors counted on more pandemic relief and speedy vaccine rollouts under the Biden administration to support the economy. Weakening labor market recovery data capped the gains of US stocks. Puneet Jain, a very warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Arjun. Well, let me make a correction here. It's Money Matters, but you will join us for Market Mantra later today. So once again, it's warm welcome to you on Money Matters. Thanks. Puneet, what's your take on the way profit booking and profit taking is taking place not only in the Sensex and Nifty, but also in the Asian and the US stock markets right now? So Arjun, a lot of people were expecting a pullback in the markets because markets have been hitting record highs, and yesterday in India we hit the psychological level of 50,000 in Sensex. So clearly markets were expecting some pullback. There is a lot of profit booking happening, but I think this is just a part of that bull market. In bull market we do see such interim profit booking sessions, but I don't think this is a trend reversal. Also, if you look at the market right now, a lot of comparisons are being made in terms of which are the likely sectors to benefit once the budget is announced. So how are retail investors going to participate in this bull run, which is bearish right now, immediately after the budget is announced? According to data, more than 6 crore investors are logged into the BSE database right now, registered as investors. That's right. So a lot of first-time investors
And a lot of retail investors are now interested in the market because they see a revival in the economy and they see a potential to make quick gains. My own sense is that post-budget, because the budget proposals are going to be more focused on reviving the economy and infrastructure sectors, basic sectors of the economy like construction, healthcare. So my own sense is that post-budget proposals, retail investors would get attracted to FMCG, consumption stocks, industrial, cyclicals. So all economy-related steps could be more attractive after the budget. पुनीत, वैश्विक बाजारों में चौतरफा मुनाफा वसूली क्या एक सोचा समझा सुनियोजित जो बड़े निवेशक हैं उनकी ओर से मुनाफा वसूली है या एक दूसरे को देखकर जो छोटे निवेशक हैं उनकी ओर से भी अपना अपना धन वापस निकाला जा रहा है ऊंचे स्तर पर? देखिए, ये बात तो सही है कि आज जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट सेंटिमेंट को डोमिनेट करती है। तो उनकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत पैसा है। भारतीय शेयर बाजार जो कि बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ भी करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपया कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड के हाथ में जो मार्केट को डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर सच बात यह है कि ये ऑलराउंड में काफी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, काफी प्रॉफिट आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि सब लोग जो फाइनेंशियल रेंज तो मार्च में एंडिंग होती है उससे पहले वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड है, हमने ऐसा कई बार दिखा है पहले। What is the trend going to be for the rupee? Because earlier macroeconomic data, whether we were in trade surplus or deficit, would determine what the valuation of the rupee is. But today, the valuation of the rupee to the dollar is based on how the foreign portfolio investors are participating in the market. So for the month already, they have invested 14,000 crore rupees. What is the behavior going to be? Are they going to short cover now? And what is going to be the behavior of the rupee to the dollar? So ultimately, if you look at fundamentally, the rupee would have appreciated like many other Asian currencies. If you look at across Asia, almost all Asian currencies, emerging market currencies have appreciated a lot against the dollar. However, the appreciation in the rupee has not been very significant because RBI has consistently maintained that they want to maintain the rupee at a reasonable fair level. In fact, only yesterday RBI came out with a statement saying that the level of the rupee is quite fair at the current level, and RBI has been buying very aggressively the US dollars. So, my own sense is that rupee, while it is weaker compared to the Asian currencies, I think rupee will remain in this range because RBI is determined to maintain rupee around the current levels of 73 to 74 rupees. पुनीत, यानी बाजार को यदि देखें तो 50,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को छूने के बाद लग रहा था कि बाजार और ऊपर जाएगा, लेकिन अब मुनाफा वसूली है। तो हम क्या ये मान के चलें कि बजट तक अब ये नीचे ही रहेगा या 50,000 की दिशा में फिर से ऊपर भागेगा अपना सूचकांक? मनोज जी, देखिए, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट को बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहना मुश्किल है कि अभी मार्केट्स में लेवल ट्रेंड का रहेगा, पर मुझे लगता है वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में वो मेंटेन होगा। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। And now moving on to the oil market. Oil prices today fell, retreating from 11-month highs hit last week. It fell amid worries that new pandemic restrictions in China will curb fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $55.40 per barrel, while WTI crude prices were around $52.30 per barrel. चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 100 रुपए घटकर 49,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 650 रुपए फिसलकर 65,650 रुपए प्रति किलो रह गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्देशीय कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक नीचे आए प्रमुख सूचकांक। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 3 पैसे कमजोर और मुनाफा वसूली से दुनिया भर के शेयर बाजारों में देखी जा रही है गिरावट। And that's it in this edition of Money Matters. For now, and goodbye.